1 दिसंबर से इंडिया विल अज्यूम द G20 प्रेसिडेंसी फॉर अ ईयर। मेक्सिको, चाइना, अर्जेंटीना और इंडोनेशिया के बाद भारत पांचवा ऐसा डेवलपिंग देश है हु इज गोइंग टू चेयर दिस एनुअल इंटरगवर्नमेंटल समिट ऑफ 20 मेजर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। बट क्या है G20 एंड डज इंडिया गेटिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ इट फॉर अ ईयर गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस फॉर अस इंडियंस? और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? वेल, ये G20 और ग्रुप ऑफ 20 1999 में बना था इन द बैकड्रॉप ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ द लेट 1990s, जिसमें सबसे ज्यादा वाट ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के देशों की लगी थी। इस ग्रुप को बनाने का मेन एम था टू सिक्योर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय इन्वॉल्विंग मिडिल इनकम कंट्रीज। इट आल्सो एड्रेसेस अ होस्ट ऑफ अदर इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। G20 मेंबर्स हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, Turkey, the UK, the US, and nations under the European Union. Together, these G20 countries make up for 60% of the world's population, 85% of global GDP, and 75% of global trade. इसकी प्रेसिडेंसी मेंबर्स के बीच हर साल रोटेट होती है। जिस कंट्री की प्रेसिडेंसी होती है, that country along with the previous and the next presidency holder forms the Troika, group of 3 countries जो responsible हैं to ensure continuity of the G20 agenda of the year. And for the first time in G20 history, इस साल के ट्रोइका में तीनों डेवलपिंग देश होने वाले हैं, इंडोनेशिया, इंडिया एंड द नेक्स्ट प्रेसिडेंसी होल्डर ब्राजील। G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं होता। हर कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव हु आर कॉल्ड शेरपास, दे कोऑर्डिनेट द एजेंडा एंड वर्क विद द फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स ऑफ वेरियस सेंट्रल बैंक्स। इंडिया की प्रेसिडेंसी में एक्स नीति आयोग सीईओ अमिताभ कांत इज गोइंग टू बी आवर शेरपा, एंड एज पर कांत's प्लान 200 meetings will be held over 1 year, and these meetings will be held in every Indian state. And then the Leaders Summit will be held in September next year in New Delhi. इस समय जो कुछ दुनिया में हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक, रिसेशन, वॉर की वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड, एनर्जी, फर्टिलाइजर्स एंड व्हाट नॉट, G20 is much more relevant right now, especially when all the other multi-country institutions are seen today as ineffective and unrepresentative of the most vulnerable countries जिनके primary concerns are on a day-to-day basis, जिनको इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन से देश वॉर में किसको weapons देकर सपोर्ट कर रहे हैं। India has gotten a unique opportunity to take charge and involve everybody, to turn the discussion in the directions it prefers, to reassess the global financial order, provide resources and solutions to the developing world, something that is required not just for their upliftment but also is of utmost importance to deal with the major climate crisis that the entire humanity is going through right now. Developed countries ने 2020 तक हर साल developing countries को $100 बिलियन देने का जो प्रॉमिस किया था to help them meet their climate change and sustainable development goals, वो अभी तक पूरा नहीं किया है। And that $100 बिलियन is also a mere drop in the ocean. Climate change को रोकने के लिए बहुत limited time window बची है, and that can only happen when the whole world acts in unison. Vasudev Kutumbakam. The world is one family, which is also the theme of India's G20 presidency. Climate crisis के साथ the world is going through a financial crisis, something that is going to impact almost 70 countries. Millions around the world are slipping back into poverty due to COVID-19, droughts, floods, and whatnot. India will have to work towards making reforms in institutions like the World Bank, the International Monetary Fund, and the World Trade Organization, with an aim to make them more attuned to the needs of developing economies. फिर Russia-Ukraine war तो है ही, which has been threatening global food security. The G20 presidency has provided an opportunity to India to assume the role of a peacemaker. India chairing a group of world's most important countries can also make all the developing countries to come together. India will act as a bridge between the developed and the developing world. और फिर अगली presidency is also going to be with another developing country, Brazil, जहां the regime has just changed. This is the time to push for reforms in multilateral institutions to reflect contemporary realities. It is a good time to also evaluate the value system on which the world is functioning today. India has never done anything like this before, where it has to steer a delicate middle path between world powers जो otherwise एक दूसरे से सीधे मुंह बात तक नहीं करती. India's presidency of the G20 has to be remembered by the world not because it leans in one direction or the other, but because it listens to all sides and takes everyone together. What do you think about India taking over the G20's presidency? Will it change the world order in some way? Tell me in the comments below and like and share this video with your friends.